Right. Hello, everyone. There's no one actually, and I'm not surprised because किसी को बताया नहीं पहले से और I just thought I'll बहुत दिन हो गए. I have not posted a video or gone online and haven't really spoken to you all. तो मैंने कहा कि चलो let's start something again and I actually felt at times that वो वीडियो बना के पोस्ट करना I'm too lazy. I actually am very lazy. तो वो वीडियो बनाओ, एडिट करो, पोस्ट करो. So I said, what the best thing to do is let's just start and doing lives. And obviously, वो live जो भी है will go on air. So I thought that's what I'll do. So start going live now more often. And I really like this whole live thing because it also gives me the opportunity to chat. So chat with you all live, take your questions. I like the interaction because obviously there is a lot that very good questions come from you all. So I think this is what I will do. So I'm sorry again कि आता हूँ जाता हूँ and all that, but I think live is something which is very very doable and I'll do it. So let's start from today, and obviously quite a few things to talk about. Obviously, Asia Cup chal raha hai. We'll talk about Asia Cup. We'll talk about World Cup squad और क्या होना चाहिए, मुझे क्या लगता है, and obviously take all your questions as and when we start talking on those lines. So hello and welcome to all of you. Deep Point, and let's start looking at it. So पहले सवाल ले लेते हैं कुछ. Hello दीप भाई, दीपक हीरा कह रहे हैं, are you watching the match live coverage? Yes, at this point in time I am covering Asia Cup as well, but I'm on the other group right now. I will join them in Sri Lanka अभी 2 दिन में, अगले 2 दिन लगातार matches हैं यहाँ पे. At this point in time I'm in Pakistan, Lahore, covering that game, covering this side of it. And yeah, 2 दिन के बाद I'll move to Sri Lanka. उसके बारे में बात करेंगे. एशिया कप एंड शेड्यूलिंग, आई थिंक दैट्स अ वेरी बिग क्वेश्चन सबके दिमाग में है, क्योंकि फिलहाल क्रिकेट की बात करें और इंडियन क्रिकेट की बात करें तो पहले मैच में बैटिंग किया, अभी सेकेंड मैच में बॉलिंग, अभी तक तो बैटिंग अभी शुरू ही हुआ है. So the big question right now is obviously the scheduling bit of it, scheduling part of it. Um, Hi everyone. Love your cricket analysis कह रहे हैं Shubhashish Malik. Thank you so much. I will now. I will start doing live. Forget videos and all that. I'll start doing live, which obviously will be uploaded, and we'll try and keep it also short. क्योंकि मैं एक बार live चला जाता हूँ ना तो I forget. I start interacting with you all and I forget. Right. So let's start with first of all, the first point that I was talking about, which is the Asia Cup scheduling bit. देखिए ऑब्वियसली देर आर कॉम्प्लिकेशंस, उस तरफ नहीं जाते हैं, लेकिन क्या श्रीलंका इस वक्त इज इट द राइट टाइम? टू बी ऑनेस्ट, अगर आप देखेंगे तो अगस्त सितंबर जून जुलाई अगस्त सितंबर इज द टाइम व्हेन श्रीलंका में क्रिकेट होता है. इफ यू लुक बैक आल्सो, एवरी टाइम इंडिया इज टूर्ड श्रीलंका तो लगभग इसी टाइम पे होता है, अगस्त सितंबर टाइम पे. कोलंबो इज अ लिटिल बिट ऑफ an issue क्योंकि पिछले 2 महीने was extremely dry. Let's not forget Sri Lanka is an island, तो वहाँ पे बारिश होती रहती है, and it's all islands are like that कि it's kind of temperamental the weather. तो वहीं पे I पिछले 2 महीने से कोलंबो has been bone dry. बिल्कुल बारिश नहीं हुई है, and this is more of a kind of a depression and थोड़ा सा नॉन सीजनल भी आप कह सकते हैं. So I don't think this was expected. कैंडी की अगर हम बात करें तो कैंडी इज लाइक अ हिल स्टेशन, थोड़ा सा ऊपर है, तो वहाँ पे वेदर होता ही रहता है, वहाँ पे ऐसे बारिश आती रहती है, तो आई एम नॉट टू सरप्राइज कैंडी. ये तो सो इसलिए आई विल, it's unfair to be too critical about it, but it's unfortunate कि it's been like that अभी तक this tournament. Um, and but what I've been hearing is there might be a change in the schedule of Asia Cup. जो कोलंबो वाला फेज था, because it's raining and I believe Colombo में काफी water logging भी हुआ है, तो that might be moved to some other venues, जिसमें से नाम जो उठ के आ रहा है वो है डम्बुला, वो है कैंडी और वो है हम्बन टोटा. ये 3 मेजर वेन्यूज के नाम उठ के आ रहे हैं, एंड आई थिंक इट माइट,
some of the games might be moved to maybe Hambun Tota, क्योंकि वो थोड़ा सा डम्बोला भी है. डम्बोला is kind of on the drier side. डम्बोला में उतना बारिश होता नहीं है, is what I've been told. So there is a good chance कि डम्बोला या हम्बन टोटा में काफी सारे ये मैचेस हैं वो मूव हों. या प्ले स्टार्ट्स एट 10:15. जी, इट्स इम्पोर्टेंट कि थोड़ा सा बैटिंग भी हो, क्योंकि ऑब्वियसली हार्दिक एंड ईशान वर एब्सोल्युटली ब्रिलियंट फर्स्ट गेम. और मैंने ऐसा ट्वीट भी किया था कि हार्दिक यू एक्सपेक्ट, बिकॉज he's become this लीडर पिछले 2 साल से. जिस तरीके से क्रिकेट खेल रहे हैं, चाहे वो गुजरात टाइटंस के लिए आईपीएल में हो या इंडिया के लिए हो, यू कैन सी दैट कि he's taking that extra responsibility of being a leader. और वो इनिंग्स जो था पाकिस्तान के खिलाफ was a very good indicator of how he's thinking as a player. तो वो तो था, लेकिन the most impressive part was ईशान किशन, because I've seen ईशान किशन bat before. जो 200 भी किया था, I've seen him during that. लेकिन I thought this is the most matured innings that I've seen ईशान play. और वो एक बहुत मेरे ख्याल से एक बहुत बड़ा टिक है बॉक्स, द वे ही बैटेड. और मिडिल ऑर्डर में अमूमन हमने देखा है ईशान को ओपन करते हुए या टॉप ऑर्डर में ही. तो कमिंग डाउन द ऑर्डर, आई थिंक दैट्स अ ह्यूज पॉजिटिव. जिस तरीके से उन्होंने खेला, पहले भी रन बना चुके हैं, लेकिन आई थिंक द वे ही गॉट दोज रन्स, द मैच्योरिटी जो उन्होंने दिखाया उस वक्त अंडर प्रेशर. इतनी जल्दी हमने विकेट गवा दिए थे सब, बड़े बड़े बैट्समैन के. So I think that is a big positive out of that. Yeah, but उससे obviously the सवाल उठता है केएल या ईशान किशन. What happens when KL is fit? By the way, I think KL is already kind of on the way of getting to 100% fitness. जहाँ तक मैंने सुना, he's already reached Colombo and he might be available for the next game. I don't think he will play the next game. I think Ishan Kishan has done a fabulous job. तो शायद उसके चलते थोड़ा सा और ज़्यादा टाइम मिल जाए केएल राहुल को. I think he might अगर एंड का एक मैच खेले, बट आई समहाउ हैव अ फीलिंग अगर केएल 100% फिट है तो ऑस्ट्रेलिया सीरीज, जो ऑस्ट्रेलिया के विरुद्ध बिफोर द वर्ल्ड कप विल प्ले अ सीरीज देयर, मे बी ही विल स्ट्रेट अवे कम देयर. सो थोड़ा सा टाइम भी मिल जाएगा और ईशान के लिए भी अच्छा है कि ही विल आल्सो गेट अ फ्यू मोर गेम्स. इस बारे में सवाल क्या, डू मोर वीडियोस? यस, सत श्री अकाल दीपक साहब. हेलो सर, क्रिक एजुकेशन. Yeah, play starts अपना माही आएगा. Yes, play will start. What's your view on Gill's hitting 3 4s in that over? Okay, so I think obviously Shubman Gill is one guy. You might call him the future of Indian cricket, Indian batting at least. जिस तरीके से वो बैट करता है और जो maturity है उसमें, I think he obviously talent wise there is no doubt. किसी के मन में कोई भी शंका है नहीं, and I'm quite confident of that. But yes, I mean he's a class act. शिवम दत्ता बहुत अच्छी बात उन्होंने कही कि don't you think Arshdeep should be in the team for the World Cup? I think so. अब लेकिन Arshdeep, because he's bowled well, he's been picked for the Asia Cup, right? Asian Games. And Asian Games or World Cup coincide कर रहा है. So I don't know how he will be in the squad. But yes, अगर कोई एक नाम, when I looked at that Asian Games वाला squad, I was like, चलो बाकी a good exposure. But एक नाम जो मुझे लगा वो अर्शदीप का था कि maybe he should have he should have kind of been there in that World Cup squad, at least be in the reckoning. क्योंकि जैसे आपने एशियन गेम्स का अपना टीम अनाउंस कर दिया, मतलब you've kind of indirectly said कि यार नहीं, अर्शदीप शायद स्क्वाड में ना रहे. So yeah, I kind of agree with you, शिवम. असम ब्लॉगर कह रहे हैं सर पाकिस्तान कैसा लग रहा है. ओके, सो पाकिस्तान कैसा लग रहा है इन द सेंस, एक्सपीरियंस तो खास कुछ कर नहीं पाए. होटल और होटल से ग्राउंड, दिस लॉट ऑफ सिक्योरिटी. जब हम लोग आ रहे थे, सो देयर आर 2 police vans in front of us, 2 police vans behind us, cordoned off.
um, and there's security all over the hotel, all over the floor and everything. बाहर जाने के लिए अलग permission, and I don't want to risk or whatever. I don't want to go out and all that. So, anyways, so अपना काम करो और and be happy with that. But otherwise, it's very normal. I mean, देख के आपको लगता भी नहीं है कि आप बाहर हैं या पाकिस्तान में हैं, because obviously the language and everything's the same. So खाना पीना and all that's the same. So उतना ज़्यादा कुछ वैसा लगा नहीं. But it was, obviously, you know, Lahore Stadium, जहाँ पे मैच हुआ उसके पहले मुल्तान में, was quite interesting. Good games as well. कल वाला काफी सॉरी, ये कल का शो जो है उसके बारे में जो हमारे प्रोड्यूसर साहब हैं उनके मैसेजेस आ रहे हैं. या राइट, सो दैट्स व्हाट इट इज. एसीसी ने क्यों श्रीलंका में कैंडी में मैचेस रखा? दीपक, जैसे मैंने पहले भी कहा कि कैंडी इज ऑलवेज लाइक दैट, थोड़ा सा रेन का रहता है, बट आई गेस दीज आर नॉट श्रीलंका. दिस इज द टाइम जब आप श्रीलंका में जनरली खेलते हैं क्रिकेट. इन उनका ये भी कहना है, in case venues don't get changed, what should be the consequence of it on cricket? See, ideally speaking, it'll be very very unfortunate अगर matches नहीं होते हैं, क्योंकि the problem is you're also looking at Asia Cup from a World Cup preparation point of view, कि आप चाहते हैं कि कुछ हाई प्रेशर गेम्स आप खेले वर्ल्ड कप के पहले. और अगर खासकर इंडियन टीम की अगर आप देखें तो एज अ यूनिट हमने काफी दिन से नहीं खेला. काफी लोग इंजरी से वापस आ रहे हैं. श्रेयस, जसप्रीत बुमराह, बाय द वे, a big congratulations to Jasprit and Sanjana, birth of their child. So big congratulations to both of them and their families and friends as well. Big news and happy news. So yeah, going back to that topic, so काफी ऐसे प्लेयर हैं जो इंजरी से वापस आ रहे हैं. काफी ऐसे प्लेयर हैं और जो कि साथ में नहीं खेले. अगर आप पिछले 6 महीने सोचे तो कभी कोई अवेलेबल होता था तो कभी कोई नहीं. तो एज अ यूनिट इंडिया हैजंट प्लेड इज बेस्ट प्लेइंग 11 इन अ वाइल. तो उस नजरिए से बिफोर द वर्ल्ड कप आई थिंक प्रेशर कह लीजिए, एज अ यूनिट कह लीजिए, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दैट वी हैव प्रॉपर गेम्स. So it'll be very very unfortunate agar it's disrupted by rain like that, the whole tournament. I hope it's not. I hope it's not. Vinay Dadich keh rahe hain, why India chose Akshar Patel over Chahal despite Chahal's decent performance in one day cricket? Right, that's a good one, Vinay, and it's a fair question to ask. मेरे ख्याल से we'll have to find a way to get Chahal in the squad as well. मेरे ख्याल से शायद वो हो वर्ल्ड कप के लिए स्क्वाड में. और अक्सर इसलिए क्योंकि अगर आप देखें तो आप अभी जो टीम है तो वी आर लुकिंग एट कॉम्बिनेशन जहाँ पे दो फास्ट बॉलर्स, आउट एंड आउट फास्ट बॉलर्स, सिराज और बुमराह पहले मैच में थे, सिराज और शमी इसमें, दो ऑलराउंडर जिसमें हार्दिक और शार्दुल है. नाउ मेरे ख्याल से अक्सर इसलिए है क्योंकि अगर दैट्स अ चॉइस बिटवीन शार्दुल एंड अक्सर इज व्हाट आई थिंक इट इज इंपॉर्टेंट टू हैव देम, बिकॉज नहीं तो अगर आप शार्दुल या अक्सर को नहीं खिलाते तो 8 नंबर पे आपका काफी जो है बैटिंग थोड़ा सा वीक होने लगता है. 8 नंबर पे यू नीड समबडी हु कैन बैट. सो मेरे ख्याल से वो एक कारण हो सकता है जिसके लिए आए हैं, लिया गया अक्सर को, कि यू हैव दैट चॉइस कि इंडिया में हो रहा है वर्ल्ड कप, एशिया कप भी अब श्रीलंका में है, जहाँ पे देयर माइट बी एन अपॉर्चुनिटी जहाँ पे आप 3 स्पिनर्स खिला सकते हैं. तो इसलिए मेरे ख्याल से अक्सर को रखा गया है. हैविंग सेड दैट, चहल हम आएंगे टुवर्ड्स द वर्ल्ड कप स्क्वाड, तब बात करेंगे कि मुझे क्या लगता है स्क्वाड होना चाहिए. The way Ishan batted, if Rahul fails in 2 games, would you plug in Ishan? It's too harsh, but still. अपना माही आएगा का ये सवाल है, इसकी तरफ रुख करते हैं. तो सवाल यह है कि केएल राहुल और ईशान, देखिए ये पिछले इनिंग्स के पहले अगर आप मुझसे पूछते तो मैं कहता कि स्ट्रेट अवे केएल राहुल, राइट. बट बिकॉज ईशान ने जिस तरीके से उस इनिंग्स को खेला अंडर प्रेशर मिडिल ऑर्डर में, तो अब सोचने वाली बात है. इट्स नॉट अ वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड चॉइस बिटवीन केएल एंड ईशान किशन, क्योंकि और एक एडवांटेज ईशान से आ जाता है वो है लेफ्ट हैंडर का. क्योंकि अभी अगर टॉप 7 पे अगर आप देखें तो टॉप 7 टॉप 8 में इनफैक्ट एक ही लेफ्ट हैंडर है, राइट.
रविंद्र जडेजा इज द ओनली लेफ्ट हैंडर। तो वहीं पे एक और लेफ्ट हैंडर अगर आ जाता है तो इट इट हेल्प्स, क्योंकि मोर ऑफन देन नॉट अगर आप ऑपोजिशंस को देखें सबके पास देयर बी अ लेफ्ट आर्म स्पिनर, देयर बी अ लेग स्पिनर, तो वो अगर दो लेफ्ट हैंडर्स रहते हैं थोड़ा सा आप मूव भी कर सकते हैं, चार पांच थोड़ा सा फ्लेक्सिबल भी हो सकता है कि आप लेफ्ट हैंड राइट हैंड कॉम्बिनेशन वाला खुल जाता है। फिलहाल आपके पास एक ही ऑप्शन है, वो है रविंद्र जडेजा का। तो उस नज़रिए से भी शायद आप सोचना चाहेंगे इस टॉपिक को और इस ऑप्शन को, केएल राहुल वर्सेस ईशान। आई होप ईशान, जैसे मैंने पहले भी कहा, कि ही गेट्स टू प्ले दिस होल एशिया कप और he gets to play more games, and then उसके बाद ऑस्ट्रेलिया सीरीज में भी केएल राहुल comes and plays, and so they are match fit, they are match ready, game time भी है, and then you make a choice before the world cup। वर्ल्ड कप के पहले थोड़े वार्म अप मैचेस भी है, इंडिया खेलेगी, तो you can kind of look at that as well, right? So I guess I've answered दीपक आपका वही सवाल। क्रिकेट एनालिसिस बाय अंताज। दीप भाई, क्या आप लाहौर में ही रहोगे या नहीं? मैं श्रीलंका पहुंच रहा हूँ कल परसों दो बैक टू बैक मैच है। कल श्रीलंका अफगानिस्तान वाला मैच है, इट्स अ क्रूशियल मैच। अफगानिस्तान विल बी वेरी वेरी डिफिकल्ट फॉर देम टू क्वालिफाई, बिकॉज जो 89 रन से हारी है पिछला मैच बांग्लादेश से, तो वहां पे थोड़ा श्रीलंका ऑब्वियसली वो नेट रन रेट का बहुत बड़ा मसला, आई थिंक माइनस सम, आई डोंट नो, देखना पड़ेगा, बट नेट रन रेट से बहुत खराब हो गया। सो कल वो एक अच्छा मैच होगा। और देन परसों सुपर फोर का पहला मैच है, पाकिस्तान वर्सेस हुएवर क्वालिफाइज। सो ये दोनों करने के बाद फिर मैं श्रीलंका जा रहा हूँ। मिस इन हिंदी कमेंट्री कह रहे हैं, थैंक यू सो वेरी मच, सो काइंड ऑफ यू टू से दैट। बस पहुंच रहा हूँ थोड़े दिन में, 2 दिन में, देन यू कैन हैव ऑल ऑफ दैट। सर आपकी तरह इंग्लिश कैसे सीखी? ईएसटीज कह रहे हैं, भाई मुझे नहीं पता, स्कूल हो गया। কৌস্তভ হালদার, কৌস্তভ, হি ইজ মাই কাজিন। সো হাই কৌস্তভ, হাউ আর ইউ? কেমন আছো? ভালো আছি। ওয়াশিংটন সুন্দর was shaping up well. Why do you think scheme of things? That's a good one. Washington, obviously he's been suffering with a lot of injuries of late. He's again a really good option. You know, white ball cricket, again an all-rounder, off spinner, क्योंकि वो एक ऑप्शन जो है वो भी शायद एक्सप्लोर करना चाहिए, क्योंकि ऑपोजिशन में अगर आपके पास ज़्यादा ऑफ स्पिनर्स है, क्योंकि और ऑप्शन नहीं है अपने पास, राइट? अगर ऑफ स्पिनर की हम बात करें तो वॉशिंगटन है, ऑब्वियसली रविचंद्रन अश्विन है, लेकिन वो भी एक ऑप्शन जो है वो इट्स अ गुड वन, बट ही इज बीन रिडल्ड विद इंजरीज पिछले 1 डेढ़ साल से। इनफैक्ट पोस्ट दैट 2020 Australia series which we won, I think he's been on and off that way. Uh, yes, I think अंता साहब का मैंने अभी सवाल जवाब दिया। धनंजय साहब कैसे हैं आप? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं भूले आपको हम। Is it over for Bhuvi and Dhawan? Of course, unless they join unless they join CSK, कह रहे अपना माई। Well, मेरे ख्याल से देव selectors are looking beyond them, भूवी और शिखर से, क्योंकि अगर आप देखें तो ऐसा कुछ ऑब्वियसली अगर they were in the scheme of things and they're not getting young, I think they're 36 37 something like that, so I think they're looking, the selectors have started to look beyond these people, so I mean, I guess so, I guess they've started to look beyond them. Amit Ratsapkar पूछ रहे हैं, sir, don't you think Virat, Ishan, KL can solve our middle order problem? I won't say middle order problem. Yes, I mean, obviously, I mean, अभी तो एक ही मैच हुआ है, अभी दूसरा भी बारिश के चलते क्या होगा, and that too, I don't think it's a proper test of the Indian batting order. But I think middle order, I don't think it's a problem. It's just that वो जो है ना, क्योंकि श्रेयस वहाँ पे होंगे. Let's not forget Shreyas is back. तो श्रेयस वहाँ पे होंगे, वहाँ पे आपके केएल स्लैश ईशान होंगे, फिर देन हार्दिक इज बैटिंग रियली वेल, बैटिंग डेप्थ भी आ गया है। अगर आप शार्दुल को खिला रहे हैं, शार्दुल स्लैश अक्सर, तो आपके पास नंबर 8 तक ठीक ठाक बैटिंग है। सो आई डोंट थिंक इट्स अ प्रॉब्लम, बट ऑब्वियसली थोड़े से होपफुली they'll score some runs before the World Cup or during Asia Cup as well. अंताज दीप भाई, इंग्लिश कमेंट्री सुन रहा हूँ पाकिस्तान लेग मैचेस का, थैंक यू वेरी मच।
playing together in limited overs कह रहे हैं अपना माही, both Jadeja and Akshar playing together in limited overs. Yes, लेकिन अब ये है कि आपके पास ऑप्शंस क्या हैं? अगर आप उस ब्रैकेट में देखें स्पिन बॉलिंग ऑलराउंडर, अपार्ट फ्रॉम ऑब्वियसली यू हैव Jadeja, you have Akshar, you have Washington. These are your three options. तो वो तीन ऑप्शन में से अभी इस वक्त हम अक्सर और जड्डू को देख रहे हैं, बट वॉशिंगटन अगेन, आई थिंक कौस्तव raised that point, a very valid point. I think makes a lot of sense. Mehran Javed Mir कह रहे हैं, sir I love you, thank you so very much, cannot believe you're in Pakistan. I also texted you on Instagram, but you should please do something on Instagram about how you're feeling in Pakistan. Okay, Mehran Javed sahab, we'll do something like that surely. Dibai should need select Ashwin, Anna, and we ideally need an off spinner. It'll be good to have that off spinning option क्योंकि ऑपोजिशन में ऐसे काफी टीम्स हैं जहाँ पे टॉप ऑर्डर में लेफ्ट हैंडर्स हैं, तो ऑब्वियसली दैट गिव्स यू एन एक्स्ट्रा एज. सो वो एक ऑप्शन है ऑफ स्पिन का, वेदर इट्स गोना बी वॉशिंगटन और अश्विन. आई थिंक इन वाइट बॉल क्रिकेट, yeah, it's a difficult one क्योंकि जब से 50 ओवर्स में वो रूल चेंज हुआ है ना कि वो सेकंड पावर प्ले मतलब 11 से लेकर 40वें ओवर तक यू कैन ओनली हैव 4 फील्डर्स. प्रॉब्लम ये हो गया है कि अगेंस्ट you can't have long on long off, deep mid wicket, deep point और deep square leg. आइडियली ये 5 फील्डर अगर आप रखते हैं स्पिनर के लिए थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप 4 ही रख सकते हैं, तो आप इन 5 में से एक को अंदर रखना पड़ेगा. चांसेस आर ऑफ स्पिनर के लिए राइट हैंडर को आप तीनों ऑफ स्टंप पे आपको रखना पड़ेगा, तीनों ऑन साइड पे रखना पड़ेगा, तो शायद आपको मिड ऑफ ऊपर करना पड़े. सो I really don't agree with that rule change क्योंकि that has taken the spinner out of 50 over game. तो it's a difficult one. इसलिए ना आप देखेंगे तो वाइट बॉल क्रिकेट में 50 ओवर्स क्रिकेट में आपका इम्पोर्टेंस ऑफ सीमर्स हैव इंक्रीज्ड. आप great example was that Afghanistan wala match, right? Afghanistan versus Bangladesh. They have top quality, world class spinner, but they didn't have enough protection. So they had to force. उनके पास वैसे फास्ट बॉलर्स नहीं है जो मिडिल ओवर्स में डाल सकें. वही बांग्लादेश की तरफ आप देखेंगे उस मैच में, तो बांग्लादेश के पास फास्ट बॉलर्स थे मिडिल ओवर्स में, तो उसका फर्क पड़ा. तो आई थिंक कहीं ना कहीं वो थोड़ा सा स्पिनर्स के ऊपर थोड़ी सी नाइंसाफी है दिस रूल चेंज. एनीवेज, त्रिशा पूछ रहे हैं, त्रिशा घोषाल, another very good friend. Rohit is struggling against in swingers, beat against Shaheen or even today Karan's first over. Are you worried about this issue? देखिए जो शाहीन वाला बॉल था, that was a very good ball. कभी कभार we just get carried away कि यार ऐसे बॉल पे आउट हो गया whatever, but just think about it, एंगल के साथ आपका बाहर जा रहा है बॉल, एंड देन शाहीन की एक बहुत बड़ा उनके पास जो स्किल है वो है उनका जो स्विंग होता है वो हाथ से स्विंग नहीं होता, वो लेड स्विंग होता है. तो आप पहला लाइन आप देखते हैं तो वो लगता है कि बाहर की तरफ जाएगा, और जैसे ही पास आता है बॉल फिर अंदर आ जाता है. सो दैट वाज अ वेरी वेरी गुड बॉल, बट यस यू हैव टू फाइंड अ वे टू काउंटर इट. गुड बॉल तो है, बट यू हैव टू फाइंड अ वे टू काउंटर इट. अब उनसे अगर आप देखें, वैसे ही रोहित का पैर बहुत ज्यादा अक्रॉस नहीं जाता आजकल. एक टाइम था 2-3 साल पहले, अगर आप आजकल देखें तो रोहित थोड़ा सा ऑन साइड खेलते हैं, उनका पैर थोड़ा सा अंदर की तरफ ही रहता है in anticipation of that in swinger. So I'm sure, I mean, Rohit being Rohit and the kind of experience that he has, I'm sure he'll find a way uh, to kind of counter ये वाला issue. But yes, और एक चीज रोहित का आपने अगर नोटिस किया हो पिछले कुछ सालों में, खासकर टेस्ट मैच क्रिकेट में, कि ही एक्चुअली बिल्कुल अगर ऊपर बॉल ना हो ना तो बहुत कम वो ड्राइव लगाते हैं, थोड़ा सा डिफेंस ज्यादा करते हैं, वेट्स फॉर एनीथिंग थोड़ा सा बैक ऑफ लेंथ, बिकॉज ही डिपेंड्स, और रादर वन ऑफ हिज प्राइमरी स्कोरिंग शॉट इज स्क्वायर ऑफ द विकेट, चाहे खासकर पुल हो या स्क्वायर कट हो या स्लैश हो. तो आई थिंक उनका गेम प्लान में थोड़ी सी तब्दीली देखने को मिली है मुझे रोहित के, कि is kind of looking at square of the wicket a little more. तो कहीं ना कहीं वो माइंडसेट से अगर जाए कि ऊपर वाले बॉल को थोड़ा सा मैं देख के खेलूंगा, डिफेंसिव खेलूंगा, तो that can
get you in that negative mindset. Sorry, एक मिनट. Right, ये अपना प्रोडक्शन मैनेजर है. सॉरी या. और लेते हैं सवाल. कौन है? Zohaib Kamal पूछे हैं, Deep sir, why is the team looking so underconfident? Has the Park match done? You're so right, Zohaib Kamal. I think that's something जो मेरे दिमाग में भी था कि somehow it's not looking like a confident side. ऐसा भी हो सकता है ना, क्योंकि काफी दिन बाद खेल रहे हैं, as a team बात खेल रहे हैं, and uh, I थोड़ा सा अंडर प्रेशर लगे ये टीम. वो जो फ्रीडम के साथ खेलते हुए देखते हैं हम, वो थोड़ा सा फ्रीडम ऐसा मुझे भी महसूस हो रहा है. मे बी इट विल टेक 1 or 2 गेम्स, एक दो मैचेस अच्छा जीत गए एंड स्टफ लाइक दैट. क्योंकि अगर लास्ट 4-5 महीने आप देखें आईपीएल के बाद से, तो लिमिटेड ओवर्स क्रिकेट में 50 हो या 20, वी हैव नॉट रियली प्लेड दैट वेल. सो मे बी that is having an effect. So going forward, दो तीन अच्छे matches, top order doing well, middle order doing well, bowlers doing well, things coming together, that might change things a bit. लेकिन जुहैब, मैं आपसे सहमत हूँ कि मुझे भी थोड़ा लग रहा है कि there's a lack of confidence in especially body language में थोड़ा सा. uh, Trisha का सवाल है, also do you think the squad has enough match winners? I think squad has enough match winners. I think squad has enough match winners. If you look at that squad, uh, obviously top order, undoubtedly, Rohit, Virat, Shubman, I think is a match winner in his own right. Hardik, middle order में, you have enough all rounders. I think combination wise and all that, I think I'm quite confident and like the look of this team. Bowling में भी अगर हम बात करें, oh my god, guys, एक minute, I think I might have to put the battery charger on one second. Sorry guys, I'll keep talking in the meantime. Yeah, sorry about that. लग जा. Wait, एक minute. Yeah, I think शुरू हो गया है. अरे, yeah, right. Right, let's take a few more questions. Sorry, वो match winner वाला, I think yes, bowling maybe, I think we have, I mean, good match winners. Kuldeep is there. Conditions को अगर हम दिमाग में रखें, you've got Siraj is bowling really well. Obviously, Bumrah is back. Bumrah के लिए भी it's important he bowls, क्योंकि अभी खेला तो है after injury, but he's played T20. 4 ओवर डाले हैं और 50 ओवर, 10 ओवर डालना, 50 ओवर गर्मी में खड़े रहना field पे, that itself is a challenge. But yes, I think India does have enough match winners. I would like to believe. Vineet, editor, कह रहे हैं, hello sir, big fan, thank you very much. Vineet, where do you commentary sir? फिलहाल तो एशिया कप ही कर रहा हूँ, लेकिन दूसरे लेग में, as I mentioned. सोहेल अंसारी, आपको कैसा लग रहा है पाकिस्तान में? सोहेल साहब, ज़्यादा फ़र्क दिखा नहीं, कुछ ऐसा कुछ नया, एज़ इन ज़्यादा घूमने का मौका नहीं मिला है, देखने का मौका नहीं मिला है. बट या, इट जस्ट फील्स नॉर्मल जैसे होता है, क्योंकि लाइक आई सेड बिफोर, स्पीक द सेम लैंग्वेज, ईट द सेम फूड, सो ऐसा कुछ अलग नहीं लगा है. दीप भाई, क्या इंडो पाक क्रिकेट रिलेशन बेटर होगा? क्या आप ये कमेंट्री कर रहे हो पाक में, और 20 मेंबर्स आल्सो इन पाक? वील सी क्या होता है. आई थिंक these are things which I guess we'll have to wait and see how it goes, how it pans out. अंकुर राव कह रहे हैं, सर 10 को इंडिया वर्सेस पाकिस्तान मैच, उसके बाहर बात करिए सर
प्लीज रिप्लाई मी। अंकुर राव साहब बिल्कुल करेंगे, 10 के पहले लाइव भी करेंगे यार, ऐसी क्या बात है। अभी तो बिकॉज आई लाइक दिस फॉर्मेट, ये लाइव वाला फॉर्मेट, बिकॉज आई लाइक इंटरेक्टिंग विथ यू ऑल। ये चार्ज दिखा क्यों नहीं रहा, वन सेकेंड गाइस। या या नाउ इट्स चार्जिंग गुड, राइट। और सवाल लेते हैं। सोहेब का हमने ले लिया है। अ, दीप मथंकर कह रहे हैं, हेलो सर, वाई स्काई इज नॉट प्लेइंग इन प्लेस ऑफ शार्दुल, हार्दिक डूइंग वेल एज एन ऑलराउंडर। दीप मथंकर, फेयर पॉइंट, लेकिन अगर आप देखेंगे, अगर शार्दुल नहीं खेलते और शार्दुल की जगह लेट्स से आप शामी, बुमराह और सिराज को खिलाते हैं, अ, उसमें मसला ये, और कुलदीप को, देन व्हाट यू सेइंग इज नंबर 8 पे, जैसे हमने देखा था वेस्ट इंडीज में, देन नंबर 8 में आपको कुलदीप को खिलाना पड़ेगा, राइट, और वन ऑफ दोज फोर। वो फिर थोड़ा सा बैटिंग मेरे ख्याल से थोड़ा सा वीक दिखने लगता है। अगर 8 नंबर पे आपके पास ऐसा कोई हो जो बैटिंग नहीं कर सकता, जो बैट के साथ आपको 30 रन नहीं कंट्रीब्यूट कर सकता, तो मेरे ख्याल से वो थोड़ा सा बैटिंग वीक दिखने लगता है। तो इट्स नॉट आइडियल, टू बी ऑनेस्ट। आइडियली यू वुड वांट, यू नो, शामी, सिराज, बुमराह एंड स्पिनर, ये चार। बट आई गेस बिकॉज ऑफ, यू नो, थोड़ा सा वीक हो जाता है उससे। सो आई गेस दैट्स द रीजन। और सुहेल अंसारी साहब, अभी मैंने जवाब उसका दे ही दिया, पाकिस्तान में कैसा लग रहा है। डू यू एग्री शमी बीइंग ड्रॉप्ड एंड पिकिंग अप शार्दुल आल्सो, दीपक चहर इंजर्ड, उनकी बात कर ही नहीं रहा, अपना माई पूछ रहे हैं। दीपक चहर का एक तो उनका इंजरी का काफी है, और मेरे ख्याल से 10 ओवर का काफी अर्जा हो गया, ही इज प्लेड अ 50 ओवर गेम। सो you know it is kind of that way, it's not easy। अगर आप, you know, अगर आप, आपको वो हैबिट नहीं है ना 50 ओवर ग्राउंड में रहने की, 10 ओवर अलग अलग स्पेल में, शायद 2 स्पेल पे हो, शायद 3 स्पेल में हो। और ये हालात अगर आप देखें इस वक्त, और इंडिया में भी अक्टूबर में, ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा ठंड होगा, इन सम एरियाज, लेट्स से कैलकाटा, अक्टूबर विल बी क्वाइट हॉट, Mumbai will be hot, down south will be hot. So it's not going to be that easy अगर आप के, you know, you haven't played 50 overs in a while to actually manage that. अंदाज कहना, दीप भाई योर प्रेप इज डन फॉर टुमारो शो। मैं अभी शुरू करूंगा इसके बाद, इसके बाद वो आ गए सारे पेपर्स वगैरह, नोट्स वगैरह आ गए, अभी बनाऊंगा मैं अपने नोट्स। हु इज द बेस्ट पॉसिबल लेफ्ट आर्म सीमर अवेलेबल इन इंडिया, गौरव कह रहे हैं। सो स्ट्रेट अवे जो दो ऑप्शन में दिमाग में आते हैं इज अर्शदीप और जयदेव, एंड आई काइंड ऑफ लाइक अर्शदीप, इवन दो I'm a big fan of जयदेव, क्योंकि what he's done over the years डोमेस्टिक क्रिकेट में, और जब भी थोड़ा बहुत मौका मिला है। बट अर्शदीप, आई नो, अगर if I have to choose between these two, मैं अर्शदीप को थोड़ा सा आगे रखूंगा। Uh, अंदाज, अच्छा, अंदाज का मैंने कर दिया है। जुहेब, यस आई अग्री। गौरव कह रहे हैं, इट मे बी टू अर्ली टू से, बट हु आर द लाइकली कंटेंडर्स टू कैप्टन टीम इंडिया फॉर 2027 वर्ल्ड कप इन साउथ अफ्रीका? गौरव, इट्स वे टू अर्ली मैन, way too early, we're talking about 4 years. 4 years is a, I mean, 4 years is longer than my international career, let me put it this way. So it's a long time. uh, okay, tough question था, commentator you enjoy commentating with the most? सबके साथ, I think all of us, we bring different things to the table. अगर आपने नोटिस किया होगा तो सबके अलग अलग स्ट्रेंथ्स होते हैं, देखने का नजरिया अलग अलग होता है। सो या, आई मीन, आई जनरली गेट along well with everyone. या, चलो, ओके, सो आई एम गोना टेक टेक अ फ्यू मोर क्वेश्चन, लेकिन उसके पहले लेट्स जस्ट क्विकली लुक एट, क्योंकि आज अपना क्या नाम है, कल 5th है ना, सो टुमारो इज द डेट फॉर आईसीसी टू सबमिट योर वर्ल्ड कप स्क्वाड।
आईसीसी के लिए। तो जो स्क्वाड है मेरे हिसाब से 15 ही हो सकते हैं, लेकिन आई एम श्योर दे विल हैव 2-3 एक्स्ट्रास एज एन रिजर्व्स में, जैसे जैसे इसमें संजू भी हैं, प्रसिद्ध कृष्णा भी, आई थिंक दोज गाइज विल बी पार्ट ऑफ द रिजर्व्स। लेकिन स्क्वाड मेरे हिसाब से कुछ इस तरीके से होना चाहिए। वो है रोहित, विराट, श्रेयस, केएल राहुल, शुभमन गिल, सूर्य, ईशान किशन, हार्दिक, जडेजा, अक्सर, शार्दुल, बुमराह, शामी, सिराज, कुलदीप। ये 15 हो गए। एंड आई वुड हैव डेफिनेटली चहल, वॉशिंगटन, प्रसिद्ध एंड संजू एज 4 रिजर्व्स। आप नाम कल तक देने हैं, लेकिन उसके बाद मेरे ख्याल से 27 तक यू कैन स्टिल मेक चेंजेस। 27th ऑफ दिस मंथ, यस यस, 27th ऑफ दिस मंथ, और इंजरीज वगैरह, बट आई डोंट सी जो स्क्वाड होगा उसमें, आई डोंट सी टू मेनी चेंजेस। जो स्क्वाड अनाउंस करेंगे सिलेक्टर्स कल, अजीत एंड ग्रुप, I think they will predominantly stick with that unless there is an injury issue or whatever. And I hope not. But it'll be a tricky one क्योंकि स्पिनर कुलदीप के अलावा आउट एंड आउट स्पिनर, आई थिंक चहल एंड वॉशिंगटन में से कोई एक, स्पेशली आई डोंट नो, इट्स अ टफ कॉल, इट्स अ रियली टफ कॉल। राइट, सो ये मेरा स्क्वाड होगा फॉर द वर्ल्ड कप 2023। लेट्स सी व्हाट ऑल यू हैव टू से। लाइव अंतास कह रहे हैं, कैन यू डू अ लाइव फ्रॉम द ग्राउंड टुमारो? I'll try. Let, let me check if I can do live. Anyways, if I do the live, you guys will get to know, right? You get notification. If you haven't, please subscribe to it. Do subscribe, and you will get a notification. And to press the like button and all that. जो भी होता है यार, formalities. Nayan R पूछ रहा, according to me, if Hardik bowls 10 overs, then भाई 3 pacers, 3 spinners, फिर कुछ कमाल हो जाता है। नयनार, जैसे मैं थोड़ी देर पहले कह रहा था, द बिगेस्ट चैलेंज इज विद दिस न्यू रूल ऑफ 4, ओनली 4 फील्डर्स आउटसाइड द सर्कल, 11 से 40। अनफॉर्चुनेटली वहां पे स्पिनर्स के लिए थोड़ा सा ज्यादा मुश्किल होता है एज कंपेयर टू फास्ट बॉलर। तो कहीं ना कहीं, and I've said this before अभी थोड़ी देर पहले, कि I'm not a big fan of this rule, but unfortunately it's better off, you can, if you have 4 seamers और बीच के ओवरों में you can bowl overs, sorry, yeah, 4 seamers, and बीच के ओवरों में you can bowl overs from the seamers। और क्या है, विराट और बाबर में से किसका कवर ड्राइव बेस्ट है, सोहेल अंसारी कह रहे हैं। ये गलत बात है यार, क्योंकि ये मैं पहले भी कह चुका हूँ कि इट्स लाइक यूर कंपेयरिंग बिटवीन अ फरारी लंबोर्गिनी। किसी को फरारी पसंद है, किसी को लंबोर्गिनी पसंद है, बट भाई दोनों अव्वल दर्जे के प्लेयर्स हैं, दोनों का कवर ड्राइव, आई वुड वॉच देम, आई वुड पे टू वॉच both of them play that shot. So it's I don't think you can choose between them, and it's also unfair to choose between them. I don't think the team is playing as a unit, Zohaib keh rahe hain. Zohaib, because they haven't played as a unit in a while. If you think about it, last time India played their best playing 11 has been a while. With Bumrah, Shami, Siraj, and Kuldeep ho ya Chahal ho, the batting order, top 5, 6. It's been a while we haven't, and it's been a while we have not actually played 50 overs cricket. बहुत कम खेलते हैं सभी लोग, not just us, but I think everyone plays very little of 50 overs cricket. So, I mean, I'm not surprised जो आप कह रहे हैं, और जो मुझे भी थोड़ा feel हो रहा है. I'm not surprised at all. Ranjit Bharti साहब कह रहे हैं, sir, why not Yuzi Chahal in this team? As I said before, कि Yuzi Chahal, I'm a little surprised. I thought Yuzi Chahal, because there's a lot of fitness issues, तो तभी आपको एक एक्स्ट्रा बॉलर प्रसिद्ध के हिसाब से वो आपको रखना पड़ा एंड स्टफ लाइक दैट। ऑलराउंडर के हिसाब से स्टिल ट्राइंग टू फिगर आउट द राइट कॉम्बिनेशन। नंबर 8 वाला जो मैंने कहा कि एक फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर आपके पास हार्दिक तो है ही, लेकिन साथ में क्या आप अक्सर को खिलाएंगे या शार्दुल को खिलाएंगे? सो आई थिंक दोज क्वेश्चंस अभी भी है। आई स्टिल डोंट थिंक that the team management has found the right combination. मतलब 1-2 प्लेयर्स ऊपर नीचे,
सो आई थिंक वो एक दो सवाल होंगे दिमाग में, तभी थोड़े से ज्यादा प्लेयर्स आपको दिख रहे हैं, क्योंकि आपको पता है यूजी आप आपके लिए क्या कर सकते हो. यूजी इज अ नोन कमोडिटी, यू नो क्या होगा. बट अनफॉर्चुनेटली इट बी वेरी डिफिकल्ट ऑल्सो टू प्ले बोथ यूजी एंड कुलदीप, you know. So वो भी एक बड़ा चैलेंज है. हाउ डू यू मैनेज? आइडियली यू वुड वांट both of them to play, but it looks a little difficult that way. uh, or Nakul Singhal, so please take my name, Nakul Singhal. Hi Nakul Singhal. True, although I don't think they will announce the backups. Yeah, I guess so. Neymar Jr. कह रहे हैं Washington. Neymar Jr. Nice. Washington Sundar in World Cup team. I think they should have between Chahel and Washington Sundar, one of them at least, or maybe both of them. If not in the squad, क्योंकि 15 member का squad is very very tight, you know. So yeah, so it's a difficult one to get all of them in there. um, yeah, but I'm sure they'll be part of the setup, because हर वर्ल्ड कप में 15 जनों का नाम ऑफिशियली जाता है. बट इफ यू रिमेंबर, हर एक वर्ल्ड कप में देयर एटलीस्ट दो तीन और लोग जो कि स्टैंड बाय के रूप में टीम के साथ रहते हैं. नयनार का दोबारा किंग कह रहे हैं केल इज फिट और नॉट मैन. किंग केल आई बिलीव इज फिट, एंड आई थिंक he's already reached Colombo today, or Kandy, or Colombo today, or rather Sri Lanka today. So he's kind of fit. Yeah. नाइट श्रेयसियन कह रहे हैं বেঙ্গলি में বহুত দিন পরে স্যার কেমন আছেন? খুব ভালো আছি নাইট শ্রেয়সিয়ান, খুব ভালো আছি. হোপফুলি তুমিও ভালো আছো. We listen some things from players like we used to be friends, now we are colleagues. Is that concerning? अपना माही आएगा पूछने. नहीं, I don't think so. I guess, see, in a team setup 15 16 17, I mean, we are all, I mean, professionals. You got to go out there, play. All 17 are not best friends. So I won't be too worried about all those statements. Everyone wants the team to win. Everyone's goal is the same, to perform individually and as a team. So as long as the goals are the same, I think it's like any other industry. It's like any other company where you don't get along with all your colleagues. As in, they're not your best friends. I'm not saying get along. It's the wrong word to use. But not everyone's your best friend. But you know, you bounce off each other. You need each other to perform well individually and as a team. Why in ODI 15-member squad, in T20 also 15-member squad is allowed? ODI squad should have more players, longer format. Neymar Jr. कह रहे हैं. I think it's been going on for a while. So I mean, really haven't thought about it. If you think about it, maybe 15 ka 16. I mean, I don't know. Right. और क्या? Right. Anyways, I think it's been quite a while. 43 minutes is what the clock shows. I think that's enough for the first time in a while. So again, thank you all for taking the time out and joining the live. I will be doing more live, and I think I just किसको मैंने बोला है कि कोशिश करता हूँ कल ग्राउंड से 5 मिनट के लिए सही. We'll see. I'm not promising, but we'll see. But I'll what I will promise is this format suits me more. I like interacting with you all. I like taking questions. So आपके पास भी अगर सवाल कुछ हो, and before a live or something, feel free. Hashtag deep point. Put it on Twitter or X. Sorry, X. I mean Twitter, nahi, X, or Instagram or something. I'll take it here in the live shows as well. And yeah, I'll do more live. There's no two ways. So again, thank you very much, all of you, for joining in, and I'll see you soon, maybe in a couple of days' time. Yeah. So yeah, and I'll try and do live from the ground, even if it's for 5 minutes. I'll try and do that. So thank you all very very much. Do subscribe and do let people know that I'm kind of back again, and we'll be doing this live thing more often. So, and I'll see you soon. Thank you again. Take care. Look after yourself. ध्यान रखना अपना और your friends and your family. Bye for now.